Abhishek, please stay in one place. अदरवाइज अटेंडेंस नहीं लगेगी तुम्हारी, अटेंडेंस नहीं लगेगी, मार्क नहीं होगी। ठीक है। अंकुर आप भी एक जगह बैठो। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए 5 मिनट के लिए। जो नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। थैंक यू। और ये अटेंडेंस मैं नहीं ले रही हूँ, ये डीजी साइट में अपने आप चली जाती है। ठीक है।
Okay, now you can switch off your camera. अभी किसकी क्लास है? बाबा सर की है मैम। बाबा की है? अच्छा, ओके बाबा सर, सुनील बाबा सर। ओके। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम।
Okay, beta, sorry for the delay. There are 2, 3 candidates who had some doubts, so just got some calls from them. So anyway, today we are having candidates who have joined today itself. We had an introduction session on Saturday. So we now have candidates from December batch, from the January batch, and some candidates from the February batch. So today, beta, I'm going to familiarize you with the exam format. So for December and January batch, it will be a repetition. For February batch candidates, it will be a new beginning. Beta, February batch candidates, can you raise your hand? Are you able to raise your hand? You can see on the right hand of the screen, right hand top of the screen, there is a raise hand button. So can you do that? Let me see how many of you are there. Okay, all right, beta. 6 of you are already there. Oh, 7 of you are there. Harjot, Harman, Shivam, Prince, Deepak, then Surinder and Subhash. All right, beta, you can lower your hands now. Okay. Before I go into the exam format and introducing you about the navigation subject, do you have any particular doubt in your mind, the new joiners? Okay, all right. So that tells me we are ready to proceed ahead. Okay, just give me a minute. I'll open up the exam format and show you. Okay, so beta, I have opened up the examination format for navigation paper. I will be taking up navigation subject with you. Now, I will be sending you a introduction mail in which you will have the syllabus of all the subjects. There are total 5 subjects in phase 1. So that mail will come to you today. If I am not able to send you, just remind me in tomorrow's class about the introduction mail. So every faculty member will introduce you to his subject. Since I am taking up navigation with you, right now what you see on the screens is the format for the navigation paper. Now this is a 200 marks paper and the duration of the paper is 3 hours. Passing percentage is the highest in this paper. That's the highest you have anywhere in any grade from second grade to ASM, that's 70%. And this paper is divided into 3 parts. So you can see part A, then you have part B, and the last one, part C. There are 3 parts in this paper. You have done navigation in your second mates also, but the difference between navigation in second mates and in phase 1 is, in second mates you had separate papers for Chartwrok and celestial navigation. Here, Chartwrok and celestial navigation are both covered up in the same paper. So part A of this paper is basically Chartwrok related part,
So you see question 1 and 2 are on Chartwrok problems, and question number 3 is on execution of the passage plan. So all these three will be related to the chart which is provided to you. The bottom two parts of the paper, B and C, are related to celestial navigation. They are based on celestial navigation. Question number 4 is on great circle and composite circle sailing. Question number 5 is on plotting और graphical combination of sites, जिसको हम लोग simultaneous staggered observations भी बोलते हैं. And question number 6 is on determining position lines by celestial observation. So this you have already done in second mates. Different methods: Marpas, long by Crone, intercept, X meridian, Polaris. Then question number 7 is on stars suitable for observation. And there is another topic on which this question could be based, that is star identification. And the bottom two questions, question number 8 and 9, are based on principles of navigation. They could be theory questions or they could be numericals, which are from your PON book, Principles of Navigation book. And they could be based on different subjects like Kepler's laws of planetary motion, or circumpolar bodies, or forming a PZX triangle and then solving it. And they could be based on charts and projections. They may give you some area, particular area, whose chart is to be made on the answer sheet. So this is the format of your paper. Now I'm taking up the bulk of this paper. Question number 1 to question number 7 are all with me. Question number 8 and 9 is with Captain Rajat Jain. So he will also be coming to your class. Now, in these questions, question number 1 to 7, our plan would be going further. As all of you are aware that we are following now a module system. The DG has converted the phase 1 and phase 2 delivery system into modular system. So we have broken up these subjects into 3 parts, 3 independent parts. So the module or the part which we will be covering in this particular month is basically this one, the yellow one. So we will be covering the entire chart work in this month. So that is our target. Up to 14th of March, 14th of March, we will be covering up question number 1, 2, and 3. Now, along with this, there are some more topics which I will be covering up, which are pending for previous batch candidates. That is number 4, great circle and composite circle. And number 7, star suitable for observation and star identification. Now, these 2 topics also I will be covering up, though they are not part of this module. They will be covered up later also. So we will cover up this also. Now, in the next month, I will again be covering up this question number 4 and 7 with you. And in the third month, for the candidate who have joined today, we will be covering up simultaneous staggered observation and determination of position line by celestial observation. So that's the plan going ahead. Now for navigation, the books which you require are basically the same books which you referred to during second mate time. So Principles of Navigation by Captain Joseph and Revari, that's the blue color book. And along with it, Practical Navigation book by Captain Subramaniam, which is based on 1992 Almanac. So these are the reference books which we will be referring to. For Chartwrok, any book which you want to refer is okay with me. However, if you are yet to purchase a book, then I would recommend Captain Chaudhary's Chartwrok is quite good and easy to understand. Otherwise, whatever book you have on Chartwrok should suffice. Now, other than this, you would require a good scientific calculator. You would require plotting tools, paddle ruler, sliding roller, set squares, pencil boxes, compass divider, all these things to do the plotting on the chart.
So for some of the questions, you may require some part of the Norris table also. However, if you don't have Norris table with you, it's not a problem. You don't need to purchase the full book. There are only a couple of tables which we refer there, and these tables are available in the soft copy also. So for practice, if you want, you can do it from the soft copy. Okay, now you would require two charts. Okay, January batch candidates, beta, which chart you are having other than 5048? 5047 भी है sir. Okay, 5047. Any other chart you people are having? 5072 or 56, anything? Sir, 5047 भी है, 5072 भी है, 5048 भी मंगवा लिया. Okay, 5072 is there with you. That's the December batch candidate. So what we will do is, beta, along with 5048, the second chart which you can purchase is 5072. So 5048 and 5072. Okay, these two charts you can procure along with the books, and we will do all our practice on chart 5048. 5072 is basically for the purpose of your exam, because the exam is usually conducted on a chart separate from on which we practice, to give you more experience of different charts. So you can have these two charts along with the other books, 5048 and 5072. So since you people don't have the chart with you right now, that is the candidates who have joined today, I am not starting immediately with Chartwrok. I will be starting off with Great Circle and Composite Sailing. Then I will follow it up with Star Suitable for Sight. So 2, 3, 4 sessions would pass covering up these topics. So by the time you will have the charts with you, and then we can proceed on Chartwrok in a full-fledged manner. So that's the plan going ahead. So whatever I have told you, beta, any doubts or queries which are coming in your mind, you can please share with me. Yes sir, can you share that contact number of that Xerox one, the Xerox copy center, so we can order the charts? Okay, I will share it on your WhatsApp group, beta. Makku's number is there. I will share it on the WhatsApp group. Just give me a minute. I'll share it right now.
Okay, I seem to have missed his number. I'll share it over your WhatsApp group, beta. Okay. Anything else, beta? Any other doubt? Okay, all right. So shall we proceed ahead, beta? Prince, your hand is raised. You want to ask something? Okay. All right. Yeah, Vaibhav, you want to ask something, beta? ये सर एक डाउट है सर स्टैगर्ड अपना स्टैगर्ड में सर जो हम लोग पहले जब पोजीशन डीआर पोजीशन निकाल लेते हैं फर्स्ट पोजीशन अपना ट्रांसफर करके एक डीआर मतलब ईपी पोजीशन निकाल लेते हैं ईपी लेट ईपी लॉन्ग निकाल लेते हैं उसके बाद हम लोग अपना पीएल ट्रांसफर करते हैं पीएल लगाते हैं सर जो उस टाइम में जो एमलेट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं Okay. When you are doing the plain and parallel sailing calculations, right? सर स्टैगर्ड में जब भी हम लोग ये अपना पोजीशन ट्रांसफर करते हैं ना सर रन लगा के एंड देन उसके बाद हम लोग उस पर पीएल भी ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद पीएल से जो हमें डी लेट मिलता है फिर हमें डी डिपार्चर भी मिलता है फिर हम लोग वो डी लेट और डिपार्चर के यूज से हम लोग डी लॉन्ग निकालते हैं तो सर उस टाइम में जो एम लेट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं जो हमारा इनिशियल लेट लॉन्ग है उसके बीच का या फिर जो फाइनल आया है उसी को एम लेट मान के Okay. Beta, strictly speaking, it should be the mean of your initial DR position and the EP which you have calculated. इन दोनों का mean जो है that should be the MLAT. ओके सर तो ये ठीक है सर क्योंकि कई जगह ना बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि या तो मेरी वैल्यूज डेसिमल में आ रही थी और बुक में राउंड ऑफ की हुई थी तो उसका ही मतलब डिफरेंस क्रिएट हो रहा था I will tell you, all the values in the book are rounded off. I think they have rounded off to decimal of a degree. So उसकी वजह से ये confusion हो सकता है. But इसमें अगर आप उसे round off भी कर देते हो to the nearest degree, many a times if the distance run is very small, usually the latitude is the same. Initial, final as well as the mean. Many a times you will see that the latitude remains the same if you round it off to a nearest degree. And secondly, ये difference इतना कम होता है कि आप इसमें चाहे calculation में initial lat ले लो, चाहे final ले लो, चाहे mean ले लो. In all the three cases, the answer is more or less the same. Okay, so that's why it is not making much difference in the calculations. However, doing it fundamentally, the MLAT should be the mean of initial latitude and final latitude. If you are transferring a PL, that means the initial DR lat and the estimated position lat. और अगर कभी बेटा प्लॉट में आपको MLAT यूज करना हो, let us say you have a fix on the plot, you have the DR position also. अब आप उसमें D lat और departure निकाल लेते हो. D lat and departure you will get from the plot itself. Now you want to convert that departure into D long. So which latitude should you use? Whether you use the DR1 or the fix or the mean of both of them. So in that case, always keep this in your mind that there is one position in the plot which you are trying to find. That is the fix. And there is one position in the plot which is known to you. Most of the time it is the DR position or the EP position. So these two positions, the one which you want to find and the one which is there on the chart, they are your reference position. And if you want to take the mean lat, it should be the mean of these two latitudes. So if you keep that principle in your mind, तो फिर ये confusion नहीं होगा. ओके सर एंड सर एक चीज और थी जैसे सर एक अपना एक ऑब्जर्वर लेट है और एक ईपी लेट है और हमारा फिक्स उन दोनों के बीच में आया हुआ है सो जो डी लेट की जो वैल्यू है सर वो हम लोग मतलब किस पॉइंट पे लेके जाएंगे ईपी लेट पे लेके जाएंगे या फिर ऑब्जर्वर लेट में या फिर नियरेस्ट में मतलब फॉर एग्जांपल जब हम स्केल से जो फिक्स बनाते हैं उस वैल्यू को जो काउंट करने के लिए हम सर डॉट डॉट करके जब नीचे लेके जाते हैं
तो हम वो ईपी लेट पे लेके जाएं कि ऑब्जर्वर लेट पे लेके जाएं, क्योंकि सर मोर और लेस मतलब तो एक तरफ नियर होगा, एक तरफ ज्यादा दूर होगा, या फिर डिपेंड करता है। राइट, नाउ द डाउट इज दैट हमारे पास जो फिक्स आ गई उसे हम किस रेफरेंस लैटिट्यूड से मेजर करें। आप इसे किसी भी लैटिट्यूड से मेजर कर सकते हो, whether it is a fixed lat or it is the EP lat or the DR lat, any reference latitude which is there on your plot can be used to obtain your fixed latitude. However, the recommended latitude is the one which is nearest to the fix. Fix से सबसे नजदीक जो latitude आपको पता है कि this is that latitude, you know that lat, उसी को यूज करना चाहिए। रीजन बीइंग कि हमारे प्लॉटिंग में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने लगता है the plotting error have a tendency to increase. So reference latitude और reference longitude जब भी आप ले रहे हो, try to take it from the nearest one which is to your fixed position. ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ गौरव बोलो बेटा। सर ये जो आपने वो फ्राइडे को 13 क्वेश्चंस जो दिए थे करने के लिए, तो Right. वो हो गए सारे। बस उसमें मेरे को एक डाउट आ रहा है, जस्ट एक स्मॉल डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो Right. उसमें एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द जीएमटी मेरिडियन पैसेज ऑफ अ स्टार। ओके, तो उसमें इनिशियली बोला था कि वो स्टार जो है वो नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर है, एंड इंडेक्स वगैरह सब कुछ दे रखा था। तो उसमें जो हम लोग यूज करते थे LHA स्टार इज इक्वल टू GHA एरीज प्लस लॉन्जिट्यूड ईज प्लस HHA स्टार, तो उसमें नॉर्थ ऑब्जर्वर में LHA तो 0 होगा या तो 360 होगा, दैट इज गुड। बट उसमें इसने 360 ही क्यों लिया, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओके बेटा, आप कुछ भी ले सकते हो। इफ यू वांट यू कैन टेक 0 ऑल्सो। मैं तुम्हें बताता हूँ 360 क्यों लिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप वहां पे 0 लोगे तो आपका इनिशियल आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। सो हाँ सर, नेगेटिव है। राइट, सो जस्ट टू अवॉइड दैट दे हैव टेकन ए 360। अब मैंने आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, दैट वाज ए आर एंगल स्टेटमेंट। आप इसे चाहे 0 ले लो चाहे 360 ले लो, दोनों केसेस में आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। जस्ट रिमेंबर दैट आर एंगल स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट ये है, the value of R angle always lies between 000 and 360. Whenever the value goes outside this range, you can add or subtract a 360 to bring it within this range. याद आ रहा बेटा, हमने ये स्टेटमेंट देखी थी स्क्रीन पे। सर लेकिन इसमें 0 डिग्री ले रहे हैं तो मेरा आंसर 3 डिग्री 27 मिनट 6 सेकेंड आ रहा है, क्योंकि माइनस 360 डिग्रीज आंसर आ जा रहा था, तो उसको 360 डिग्री ऐड करके प्लस 3 डिग्री 27 मिनट समथिंग आंसर आता है। और जब इसमें 360 डिग्री लेके कर रहे हैं तो आंसर 356 डिग्री 32 मिनट 54 सेकंड आ रहा है। ना बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर यही आ रहा है, मैं वही 2-3 बार चेक किया। अभी कर देते हैं बेटा, अभी कर देते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन अप द व्हाइट बोर्ड। बेटा, जो फरवरी बैच के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके ऊपर से जा रही है, ये मुझे पता है, बिकॉज हमने अभी कुछ नहीं किया है। ये पुराने बैचेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके डाउट्स हैं, तो ये सारे टॉपिक्स मैं फरवरी बैच के साथ करने वाला हूँ। सो ये सारे के सारे टॉपिक आगे आएंगे, तो आपने कोई लोड नहीं लेना दिमाग पे कि ये सब ऊपर से जा रहा है। वी विल बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। ओके ओके बेटा, बताना आपका कितना था। सर इसमें लॉन्जिट्यूड है 72 डिग्री 20 मिनट्स। ओके, सो LHA को बताओ क्या लेना चाहते हो, 0 या 360? जिससे आंसर नहीं आ रहा वो बताओ। 3 सर अब 360 ले लेना सर एक बार, पहले आप 360 से कैलकुलेट कर लो। Let's take it as 360. Now this is equal to GHA Aries, okay, plus SHA star and longitude east है या west है बेटा?
ईस्ट है सर। ओके, लॉन्जिट्यूड ईस्ट, GHA लीस्ट, तो ये ऐड हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन जो है वो ये बनेगी, ईस्टर्ली लॉन्जिट्यूड इक्वल टू 360। तो बेटा जस्ट गिव मी द वैल्यूज ऑफ व्हाट इज GHA एरीज एंड लॉन्जिट्यूड। सर GHA एरीज हमको फाइंड आउट करना है। लॉन्जिट्यूड इज 72 डिग्रीज 20 ईस्ट। ओके, 70 to 20 एंड SHA कितना है बेटा? 291 डिग्रीज 7.1। 291 7.1। यस। बेसिकली अब बेटा ये दोनों वैल्यूज जब इस तरफ जाएंगी तो ये हो जाएंगी माइनस। ओके, तो तुम्हारा आंसर यहाँ नेगेटिव में आ रहा होगा। सो हाउ मच इज दैट नेगेटिव आंसर? फर्स्ट टेल मी दैट। सर -3 डिग्रीज 27 मिनट्स 6 सेकंड्स। ओके, 3 डिग्रीज 27.6। तो ये हमारा आंसर आ गया नेगेटिव में। अब हम इसे पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें प्लस 360 करेंगे। हाँ, प्लस तो 360 आई ऐड 360 टू इट। ओके, एंड मेरा जो आंसर है ये आ जाएगा अब 356। ये हो जाएगा 32.4, राइट? यस सर, यस सर। सो ये आ गया बेटा मेरा GHA एरीज। राइट, नाउ यू वांट टू टेक इट एज 0? हाँ 0 लेंगे सर, 0 लेंगे तो फिर वेरी गुड। अभी देख सकते हैं, ये देखो हमने इसको 0 ले लिया। तो अब 0 में से ये दोनों वैल्यूज जब माइनस करोगे आप, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा -63 डिग्रीज 27 मिनट 6 सेकंड्स। 363 27.6, राइट? अच्छा सर, उसमें 2 बारी 360 करना पड़ेगा मतलब? Exactly. See, I told you in that statement, you can add or subtract any number of 360 degrees to bring it within this range. So आप एक बार 360 ऐड करोगे, फिर ये -3 डिग्री रहेगा, दूसरी बार से तो आंसर 356 आ जाएगा। तो वही कंफ्यूज कर रहा था सर कि 2 बारी ऐड करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए मैं थॉट कि 2 बार भी, 3 बार, 10 बार, 20 बार भी कर सकते हो to bring it within the range. ठीक है सर। एंड सेकंड थिंग सर, जो कंप्यूटेशन सॉरी बैक एंगल कैलकुलेशन जो होती थी, उसमें आपने बोला था कि जैसे सन के लिए करेक्शन में रिफ्रैक्शन 7 डायमीटर वगैरह लगाते थे, बट आपने बोला था कि जो भी क्वेश्चन में अगर लोअर लिम दिया है तो उसकी जगह पे अपर लिम की करेक्शन लगा दो, राइट? दैट्स राइट बेटा। वैसे वर्षा करना है, एंड लेकिन साइन वही लेना है ना। जैसे अगर अपर लिम एल्मेनाक में -16.1 लिखा है तो उसको -16.1 ही लेंगे ना, उसका साइन तो चेंज नहीं करेंगे ना? नहीं बेटा नहीं, देखो हमने क्या किया था, हमने पहले जो भी हमारे पास सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड था उसे लिखा, उसमें हमने इंडेक्स एरर को एज यूजुअल अप्लाई किया, डिप करेक्शन को भी एज यूजुअल ही अप्लाई किया था। तो ये दोनों करेक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक एपरेंट ऑल्टीट्यूड आ गया। हमने क्या किया था, 180 माइनस दिस एपरेंट ऑल्टीट्यूड, ये किया था हमने। जैसे ही हम 180 माइनस एपरेंट ऑल्टीट्यूड करते हैं, this is where the limb changes. Okay, the limb changes here. So if in the question it is given as upper limb, जैसे ही आप 180 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये लोअर लिम्ब हो जाएगा, एंड इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज लोअर लिम्ब, जैसे ही आप 180 से सब्ट्रैक्ट करते हो ये अपर लिम्ब हो जाएगा। नाउ वंस द लिम्ब हैज बीन चेंज्ड हियर, आफ्टर दिस नो चेंजेस टू बी डन। अपर लिम्ब की करेक्शन नेगेटिव होती है, हम इसमें नेगेटिव ही लगाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, बस वही कंफर्म था। हो गया सर, थैंक यू। ये ओके सर लो लिम्ब होता तो ऐड ही कर देते, मतलब फिर नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल। एग्जैक्टली बेटा, वंस यू हैव चेंज्ड द लिम्ब, आपने अपर को लोअर या लोअर को अपर कर दिया है, आफ्टर दैट इट्स ए परफेक्टली नॉर्मल क्वेश्चन। अगर अपर लिम्ब है तो करेक्शन टोटल माइनस होगी, और अगर लोअर लिम्ब है तो करेक्शन प्लस होगी। एंड इसका फंडामेंटल अपने माइंड में तुम क्लियर रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सी व्हेन यू हैव 180 से सब्ट्रैक्ट आपने क्यों किया है, यू हैव चेंज्ड द होराइजन, एंड एज यू हैव चेंज्ड द होराइजन, जो आपकी ऑब्जर्वेशन ली गई थी उसमें जो लिम्ब था, एज द होराइजन इज चेंज्ड द लिम्ब हैज आल्सो चेंज्ड। तो अब आप ऑपोजिट होराइजन पे अपर लिम्ब की जगह लोअर लिम्ब का एल्टीट्यूड करेक्ट कर रहे हो, so obviously you will apply the correction for the lower limb as it is done in a normal way. That means for lower limb it will be plus.
ओके ओके, तो फेब्रुअरी बैच कैंडिडेट, बेटा बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे डाउट्स आते रहेंगे। हम अब आगे से क्या रखेंगे, वी विल व्हाट वी विल डू इज कि हमारा जो सेशन होगा उसमें लास्ट के 15-20 मिनट्स जो हैं दैट विल वी विल बी कीपिंग फॉर डाउट्स। तो हर एक सेशन के 15-20 मिनट्स पहले जो भी डाउट्स होंगे ये हम सॉर्ट आउट करेंगे, एनी टॉपिक विच यू हैव। नाउ इट इज पॉसिबल कि कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड जस्ट नाउ, or them or candidates who have joined later, they may not have covered that topic. So it is perfectly fine, आप सिर्फ उस डिस्कशन को सुन लो, वो सारा का सारा टॉपिक जो है वो आपके साथ दोबारा कवर अप होने वाला है। So it will be done. Okay? So February batch candidates, बेटा लोड तो नहीं आया दिमाग पे? आया सर थोड़ा। Okay, don't worry, सारा धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा, don't worry। हाँ, ओके ओके। तो हमारी भी पहले यही हालत थी जनवरी वालों की भी। एग्जैक्टली बेटा, तुम जनवरी बैच से पूछोगे तो जब शुरू में उन्होंने ज्वाइन किया था तो द टॉपिक्स वर लुकिंग ओवरवेलमिंग, बट इफ यू हैव ए वर्ड विद जनवरी बैच कैंडिडेट्स नाउ, so they will tell you that they are quite comfortable. तो ऐसा ही आपके साथ होगा। So when you spend some time here, you will be getting comfortable topic by topic. Okay? Okay. मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो पुराना टॉपिक है, एंड यू डोंट नीड टू टेक लोड ऑफ दैट टॉपिक। स्पेशली अगर कोई पुराने बैच का कैंडिडेट डाउट पूछता है तो वो डाउट आपने बिल्कुल अपने दिमाग को बंद कर लेना है। ओके, हाई लेवल अलार्म एक्टिवेट कर लेना है, दिमाग को बंद कर लेना है, नो मोर लोडिंग। ओके, नो मोर कार्गो लोडिंग। सो वो डाउट जब सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड आई विल टेल यू दैट दिस इज ए फ्रेश टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डू, उसमें फिर अपनी पूरी अटेंशन आपने लगानी है। जैसे कि अभी तक के डाउट सॉर्ट आउट हो गए हैं और अब मैं एक फ्रेश टॉपिक जो है ये शुरू करने वाला हूँ फॉर एवरीवन। ये जो फ्रेश टॉपिक है ये है ग्रेट सर्कल सेलिंग एंड कॉम्पोजिट सेलिंग। सो दिस इज ए टोटली फ्रेश टॉपिक एज न्यू फॉर द दिसंबर बैच और जनवरी बैच एज इट इज फॉर द फरवरी बैच। सो ये अब एक बिल्कुल नया टॉपिक है। इस टॉपिक को अब आपने ध्यान से सुनना है एंड जो भी डाउट्स आएंगे, नाउ यू विल बी एबल टू कैरी अलोंग विद एवरीबडी एल्स इन द क्लास। ओके, so just give me a minute, I'll open up the presentation and we will start on this topic. Okay, beta. So this is a fresh topic for everyone, and all the people, whether it is December batch or January batch or February batch, you should be able to connect with me. So February batch candidates have just started today, so I will be going a little slow because suddenly बहुत ज़्यादा heavy topic मैं उनको एकदम से नहीं दे रहा हूँ. So I will be going a little slow so that you can catch up and understand this. अब बेटा सबसे पहले तो ग्रेट सर्कल सेलिंग ये हम करने वाले हैं. व्हाई वी आर डूइंग दैट? हमारे एग्जामिनेशन पेपर में एज आई जस्ट शोड यू द फॉर्मेट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ग्रेट सर्कल सेलिंग एंड कॉम्पोजिट सेलिंग, इन्हीं दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक पे आता है. सो वंस वी डू दिस टॉपिक, द टेक अवे वुड बी दैट वी विल बी एबल टू number 4 of our final paper. That's straight away 25 marks. So ये टॉपिक अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे 25 मार्क्स पॉकेट में है. दिस टॉपिक इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर टॉपिक्स. किसी और टॉपिक से इसका कुछ लेना देना नहीं है. सो एल्मनैक, सेलेस्टियल नेविगेशन, स्टार सूटेबल, प्लैनेट, मून, सन, चार्ट वर्क, किसी भी टॉपिक से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है. दिस इज ए टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक.
ओके, तो सबसे पहली चीज जो हमें इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करनी है, ये टॉपिक है हमारा ग्रेट सर्कल सेलिंग। तो सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है, व्हाट इज ए ग्रेट सर्कल। बेसिकली जो एक ग्रेट सर्कल है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर whose plane passes through the center of the sphere। जैसे ये एक डायग्राम जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें हमारे पास एक स्फीयर है एंड इस स्फीयर में आपको दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। दिस इज बेसिकली द अर्थ। You can see a black color dotted line which is the equator. This is the equator, black color dotted line। और यहाँ पे दो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू कलर का है दिस वन, और दूसरा सर्कल जो है ये पर्पल कलर का है दिस वन। अब ग्रेट सर्कल क्या होता है? ए ग्रेट सर्कल इज ए सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर whose plane passes through the center of the sphere। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो पर्पल कलर का सर्कल है उसका प्लेन स्फीयर के सेंटर में से, विच इज मार्क्ड एट सी, स्फीयर के सेंटर में से पास कर रहा है। तो दिस पर्पल कलर सर्कल इज नोन एज ए ग्रेट सर्कल। जो ब्लू कलर का सर्कल है, विच कुड बी ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये जो ब्लू कलर का सर्कल है इसका प्लेन हमारे स्फीयर के सेंटर में से पास नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सर्कल। In fact, all the parallels of latitude other than the equator are small circles. Only equator is the parallel of latitude of equator is a great circle. All other parallels are small circles. If we come to meridians, now all the meridians, they pass from north and south poles, and whatever meridian it is, every meridian and its anti-meridian will together form a circle whose plane passes through the center of the earth. So all the longitudes or all the meridians are great circles. Great circle को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो that a great circle is a circle on the surface of the sphere whose center matches with the center of the sphere। आप देखोगे पर्पल कलर का जो सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो स्फीयर के सेंटर के साथ मैच कर रहा है। जो ब्लू कलर का सर्कल है उसका सेंटर कहीं और है, स्फीयर का सेंटर कहीं और है। तो इफ द सेंटर्स आर मैचिंग, इट इज ए ग्रेट सर्कल। इफ द सेंटर्स आर नॉट मैचिंग, इट इज ए स्मॉल सर्कल। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड चीज जो हमारे माइंड में आती है कि why are we using this great circle for sailing। हमारे पास तो सेलिंग के और सिंपल मेथड्स हैं। वी हैव प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग विच इज अ वेरी सिंपल मेथड। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज को यूज करके अपने कोर्सेज और डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। व्हाट आर सेलिंग? सेलिंग्स आर बेसिकली डिफरेंट मेथड्स विद विच वी कैन कैलकुलेट कोर्सेज एंड डिस्टेंसेस। तो हमारे पास तो सिंपल मेथड भी हैं, हमारे पास प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग है, हमारे पास मर्केटर सेलिंग भी है। इन दोनों सेलिंग्स में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके बहुत ही आसानी से अपने कोर्सेज और डिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन व्हाई गो इनटू स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री? ये जो स्मॉल सर्कल और ग्रेट सर्कल मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज बेसिकली स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका बेटा रीजन है, रीजन इसका ये है that great circle sailing gives us the shortest distance between any two points on the surface of earth। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो तो ग्रेट सर्कल मेथड ही आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। Now obviously as a navigator we are interested in taking our ship from position A to position B, and that too by using the shortest distance possible in the earliest time, okay? Because after all it's a financial venture. If you want to reach to a destination, so making financial sense, you should be following the shortest path.
So that is the importance of great circle sailing. Why do we use it? Because it gives us the shortest path or shortest distance between any 2 points on the surface of Now, the next definition which we need to be clear is, what is a spherical triangle? Now, we are aware what is a great circle. We know what is a small circle. Now, if you have a triangle on the surface of a sphere, all 3 sides of which, it's a triangle, so obviously it will have 3 sides. So all 3 sides of which are part of great circle. अगर ऐसी कोई ट्रायंगल हमारे स्फीयर के सरफेस पे बने, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की हम बात करें, तो अर्थ के ऊपर अगर कोई ऐसी ट्रायंगल बने जिसकी तीनों की तीनों साइड्स ग्रेट सर्कल्स हों और दे आर पार्ट्स ऑफ द ग्रेट सर्कल, तो ऐसी ट्रायंगल को हम लोग स्फेरिकल ट्रायंगल बोलते हैं. लाइक you see these 2 positions here on the surface of earth, position A and position B. अगर मैं इन दोनों को एक ग्रेट सर्कल ट्रैक से ज्वाइन कर देता हूँ, लेट्स से ये जो रेड कलर का ट्रैक है, इट इज द ग्रेट सर्कल ट्रैक बिटवीन देम, जीसी ट्रैक. एंड यू सी ये वाला जो मैंने सर्कल बनाया है, दिस इज बेसिकली पासिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड दिस पर्टिकुलर पोजीशन. Can you tell me what is this great circle, beta? P, A, P dash? Meridian. Very good. It is the meridian of position A. And similarly, if I draw a circle from P to Bravo to P dash, it will be the meridian or longitude of B. So all the meridians are great circles. जो A to B हमने ट्रैक बनाया है वो PGC ट्रैक है. So this triangle which you see here on the diagram, PAB, Papa Alpha Bravo triangle, is a spherical triangle. So that's the next concept. This is a spherical triangle. Okay, so beta, up to here, everybody is okay? Yes. Very good. Great circle, small circle and spherical triangle. ये तीनों चीजें हमें समझ में आ गई. अब बेटा आगे जो है, आगे हैं कुछ फॉर्मूले जिनके साथ हम इस स्फेरिकल ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको मैं ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ. वी विल डिस्कस. देयर आर 2 formulas which we are going to discuss. The first one is cosine formula and the second one is Napier's rules. ये आपने सेकेंड मेट में भी किए हुए हैं, ये आपने प्रीसी में भी किए हुए हैं. सो इट विल बी ए रिवीजन, ए रिफ्रेशर फॉर दीज 2 formulas. इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से हम ग्रेट सर्कल सेलिंग की कैलकुलेशन को करते हैं. तो लेट्स टेक ए ब्रेक नाउ. We can have this short break and we will meet back at 10:15. Candidates who have joined today, beta, usually after every 1 hour session we have a 15 minutes break. Okay, so it is there in your timetable also. So we should meet back at 10:15 now. So no need to disconnect from the class. You can keep logged in. You can just mute your camera. The camera is already muted. You can just mute your mic if it is on, and then you can come back at 10:50. So any doubts, beta? Yes, sir. Can you synchronize the watch, because maybe sir you have different times, 5-10 minute difference. What is time in your PCs? Okay, beta. The right now time is 9:55. Okay, sir. Okay. So watches compared and times checked, and we can write this in the logbook now. So let's be back at 10:15.